हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो हमारा सेशन है ये ओबी के लिए है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड थ्रू दिस सेशन आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रश अप ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो सारे टॉपिक्स को थोड़ा मैं इस सेशन के थ्रू ब्रश अप करना चाहूँगा। ओके तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस और द साइकोलॉजी। ओके, इट्स पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस और द साइकोलॉजी थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क. Not only understand,
we predict and control the behavior of employee actually. You can say the behavior of employee at work or the behavior of employee simply. Okay. तो क्या होता है कि जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसको हम पढ़ के जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. ठीक है. अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एम्प्लॉय के बिहेवियर को ही अंडरस्टैंड करते हैं, खुद के बिहेवियर को भी समझना होता है. अब इसमें जो आप टॉपिक देखेंगे, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लीडरशिप, लर्निंग. ठीक है. जो लोग भी अगर आप मेरा देख रहे हो ऑनलाइन सेशन अभी, तो आप कमेंट कीजिए. ओके. और जिनको नहीं मिला है, यू कैन क्या कहते हैं, बाद में आप देख सकते हैं. ठीक है. अभी आप अगर नहीं देख रहे हैं तो फॉर द टाइम बिंग जो लोग भी अभी देख रहे हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड या कोई क्वेरी हो, अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है. जो इससे हमारा पिछला सेशन था कि मैंने जूम के थ्रू कनेक्ट किया था. आई एम जस्ट टेस्टिंग द सिमिलरिटीज एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द जूम एंड द through the YouTube directly broadcasting. Okay. Then I'll decide which one is better, then I'll go with them for the online classes. Either I will connect through the Zoom directly or through the YouTube. ठीक है. तो I'm not feeling well, but it's time for online classes. That's why I'm here. Okay. I'll try to brush you up some organizational behavior concept like personality, perception, leadership, learning. Okay. Conflict and group dynamics. These are some of the topics we studied in the organizational behavior. As I said that in organizational behavior, through the theories and practices of the organizational behavior, we understand the behavior of the employee and we predict the behavior of employee, we control the behavior of employee. And to understand the behavior of employee, we need to study some of the topics like personality, perception, leadership, learning. Okay. Conflict management, group dynamics, job satisfactions. Okay. And other phenomena also. There are so many variables of the organizational behavior that we need to study actually. Personally, if you are not in a BBA or MBA, you should study the actually this part of psychology or behavioral part of the psychology. Okay. Now let's start our first topic, which is personality. There are so many ways you can define the personality. Personality is sum total of how you react actually, how you react to something. Personality is all about behavior. Okay. There are so many ways to define the personality, like personality is collection of some internal and external qualities of the human beings. But in brief, in real terms, it's about the behaviors. It's about how you react, okay, in particular situations. That is personality. And everyone is different. Everyone is different, their approaches and their reactions towards any events or towards anything else. Okay. That is the way of defining personality. There are so many psychologists that define the personality, and I believe Sigmund Freud is one of the most prominent psychologists who defined the personality through the psychoanalytic theory, which I have already discussed in my offline classes. Like personality consists of ego and the superego. Okay. It's all about the psychological part. Actually, you behave according to your psychology, the psychological status actually. The same thing like ego and superego is described in another way like parental, adult and childish ego actually, childish ego status. So we need to understand the personality through the psychoanalytic theory, okay, through the Sigmund Freud theory, and there are other theories also. But in simple, personality is
collection of your internal and external qualities that impact your behavior. If you go through the book like Robinson and Luthans, that defines the personality is the reaction actually, sum total of reaction actually. आप देखेंगे क्या है कि like teachers, like student, जब भी आप स्टेज पे आओगे तो जो डिफरेंट टीचर होता है वो डिफरेंट बिहेव करता है. अगर स्टूडेंट को कभी स्टेज पे बुलाओगे तो किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है. तो दैट बिहेवियर इज एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी. नाउ व्हाट डिटरमाइंस द पर्सनैलिटी? ओके, पर्सनैलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, या पर्सनैलिटी को कैसे हम क्या कहते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं. सॉरी, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है पर्सनैलिटी? आई मीन टू से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्ले रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है. देज आर द सम ऑफ द फैक्टर. मोस्ट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसमें हेरिडिटी है, ठीक है, और आपका जो बायोलॉजिकल फैक्टर में कलर, कंप्लेक्शन, हाइट एंड वेट, ये सब सारी चीज़ें आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, ठीक है. दूसरा अदर फैक्टर है सोशल फैक्टर, कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिहेवियर को शेप करने में, ठीक है. जिस तरह की सोसाइटी में आप रहेंगे आपका बिहेवियर वैसा होगा. सिमिलरली सोशल एंड फैमिली फैक्टर भी, आप जिस तरह की फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, वैसे ही आपका बिहेवियर होता है, ठीक है. तो इसी तरह का इकोनॉमिकल फैक्टर भी है. इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं, पैसे वाले का बिहेवियर आप देख लीजिए, पुअर लोगों का बिहेवियर. तो पर्सनैलिटी को शेप करने में मनी भी एक फैक्टर है, दैट इज़ इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है. और भी अदर फैक्टर्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट ब्रशिंग यू अप अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्रू दिस सेशन. ओके, this is personality. Then we study the perception actually. Perception is the people's view about the reality. एक reality है, उस सबका view अलग अलग होता है. Okay, people's view about the reality. Different people view the same thing differently. Okay, your perception towards everything is different actually. You all guys perceive the same thing differently. Okay. In this context, I have given you an example. Like, if you wear a rose-colored glasses, you will see everything rosy, and if you wear a black-colored glasses, you will see the world is black. It depends up to you what kind of glasses you wear actually. What kind of glasses you choose to wear. ओके, आप जिस तरह का चश्मा पहनेंगे दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी. तो परसेप्शन का रियलिटी से लेना देना नहीं होता है. होता क्या, आप जो परसेप्चुअल प्रोसेस है, इट्स ऑल्सो अ कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं अपने सेंसर के थ्रू. सेंसर, यू नो द वी हैव 5 सेंसेस, ठीक है. सेंस के थ्रू किसी चीज़ को सेंस करते हैं, किसी इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है. सेंस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं. देन हम इंटरप्रेट करते हैं. जो 3 स्टेप है परसेप्शन का, कि हमने क्या क्या इवेंट्स या किसी चीज़ को, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ओके, इन सब चीज़ों को अपने सेंसर्स के थ्रू सेलेक्ट करते हैं. तब हमारा दिमाग क्या करता है, उसका ऑर्गेनाइज करता है. फिर हम इसे इंटरप्रेट करते हैं. जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन, आइडिया, ये सब के रूप में सामने आता है, ठीक है. मैंने परसेप्शंस के बारे में कहा था कि अब देखो, किसी का भी परसेप्शन टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स अदर अलग अलग होता है, ठीक है. अब परसेप्चुअल मैकेनिज्म को यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पीपल, ओके, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द perceptual process, okay, which I will discuss in OB. Okay, now after perceptions, in perception we study the perceptual process, perceptual mechanism, and the perceptual error and the factors that influence the
perception. These are the three topics that we need to study under in a BBA actually. Okay, now after perceptions you can study the learning. Learning is most important topics in organizational behavior because it helps you to train employee. It helps you to understand in learning also. Okay, so learning is very important. I have already delivered a lecture on it actually. Okay, you know the learning is the change of behavior, and we need to teach or train employee through the classical conditioning theories, operant conditioning theories. Okay, and other theories of learning is cognitive learning, social learning. Okay, these are the some theories of the learning that we need to study in organizational behavior. Okay, after studying learning, then we need to understand the leadership actually. In organizations, we need to understand the leadership. Because success and failure of any organization is depend upon the leaders actually. Leaders are those who lead the group, who influence people towards achieving the goals, who influence their followers towards achieving their goals. Under this topic, we need to understand the theories and the styles of the leadership. Theories of leadership, the great man theories of the leadership, early trait theories of the leadership, behavior theories, okay, contingency theories and the contemporary theories, which I have already discussed in my offline classes. Okay, I'm just brushing you up that these theories we need to understand. And the early trait theories says that the leaders are the born actually. We cannot train anyone to be a leader. Okay, but the behavioral theory says that we can change the behavior of people to be a leader. Okay, so there is a contradiction that the earlier trait theory says the leaders are born, and the behavioral theory says the leaders are made. Then you can be asked a question like whether the leaders are born or made. You need to explain. Okay, so this is it. Leadership. Then we can study the group dynamics. Group dynamics, the behavior of people in a group is different from when you are individual actually. Okay, so we need to understand the group dynamics. Group have potential, why and how groups are formed. Okay, these are the some of the topic that we need to understand. Another is the conflict management in organizations or everywhere. When people work in a group actually, even you are in a class or anywhere else, there is a possibility of arising the conflict actually. Then you need to diffuse that conflict. You need to manage the conflict. Sometimes conflict is good actually. Sometimes conflict is bad. Sometimes the manager or the leaders in organization intentionally create the conflict. Okay, to achieve the performance, a kind of competition or the healthy competitions. Sometimes managers need to diffuse or decrease or remove the conflict actually. So we need to understand the conflict management and other individual aspects. Also you need to study like job satisfaction. What is the job satisfaction? Because if you are not satisfied, then you won't be able to work in organizations. Okay, so the job satisfaction is very important. If you are psychologically or physically fit and your work environment will be fit, there are so many factors that influence the job satisfactions actually. There are so many theories of the motivations actually that through which you can understand the job satisfactions. Okay, these are some simple topics that we need to study in organizational behavior. One by one I'll try to explain through the online classes or through this live stream. Okay, I'll go deeply, but today I was just
brushing you up about the topics what we need to take during my session. One by one I'll try to explain each and every aspects of the organizational behavior. Thank you so much for the time being. Have a good day. अगर आपने मेरा क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो ये ऑनलाइन आप क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं. And as far as my attendance is concerned, I'll take the attendance through what you can say that through the text actually. You can even text your roll number for the time being. Thank you so much. Have a good day.